मटेरियल्स हम लोग को चाहिए वो है एक पीस ऑफ क्लोथ। कोई भी आपके घर में जो पुराना क्लोथ पड़ा हो उसको आप लोग ले सकते हैं। थोड़े से पेंट ब्रशेस, एक रस्सी, पॉलीथीन, टब, एक ब्लैक मार्कर, अ पेयर ऑफ सिजर्स, एक वाटर बॉटल, एक ब्रिक, पुट्टी और एक्रेलिक कलर्स। So without wasting the time, let's see what is the procedure. Hello friends, welcome back to my channel Mandir Prajot and Chirantan. Today I will teach you how you can make a very beautiful pot from a waste cloth. And friends, don't forget to like my video, subscribe my channel and share my videos with your friends and family. So let's see what are the materials required. फ्रेंड्स, मैंने पुट्टी से जो उसकी रस्सी थी उसको भी कवर कर दिया है। अब हम लोग इसे धूप में सूखने के रख देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। तो मैं आपको मिलता हूँ उसके बाद। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से सूख चुका है और सूखने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम लोग इसे एक्रिलिक कलर से पेंट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग का पॉट रेडी हो गया है। मैंने इसे अच्छे से कलर भी कर दिया है और उसके बाद फिर डेकोरेशन के लिए मैंने तुलसी की स्टेम यूज़ की है। उसके बाद मैंने बर्ड्स लगाई हैं और फिर नीचे मैंने मिट्टी लगाई है। उसके ऊपर फिर मैंने इसे लगाया है और अब ये पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।